We discussed about different type of signals like energy signal and power signal, and we have completed the classification of signals in the previous class. Uh, Now, as the classification of signals uh, has been completed, now we can start with the classification of systems. So, systems can be classified into different type of categories depending upon the depending upon their behavior. Basically, a system uh, you can define a system as a kind of interconnection of different components, and those interconnection between different component is done in such a way that so that a desired task can be performed by the system. For example, say if you want to design an amplifier, you require a transistor which can act as an amplifier. Then you require some kind of a load resistance. Then input resistances are required. Then some bypass capacitors are also required. So you can define amplifier as an interconnection of different electrical and electronic components. And predominantly it's electronic component. Only the power supply unit which is applied to the transistor is you can say that it comes from the electrical part. Otherwise, rest of the components, that is transistors and resistors and capacitors, they are from electronic engineering. So it is an interconnection of electronic components, and the system is operated in such a way that, because you know that the transistor can be operated in 4 different regions, right? So it will be operated in a under certain conditions so that it can amplify the input signal. So that is the definition of an amplifier, and you can also define amplifier as a system where system has a transistor and different components are connected with the transistors, and the function of the system is to amplify the input signal. So depending upon the behavior of the system, you can classify the system under different categories. So we start with the classification of CT and DT systems. So first classification of CT and DT system is static and dynamic systems. So what is static system? As the name specify, that static systems are those systems whose properties does not changes with respect to the time, or they do not have any memory element. Right. So static components are those, static systems are those which do not have any kind of a memory element, whereas dynamic element systems are those which consist of certain kind of memory element. So let us understand it with the help of an example. So, suppose that we have a system, and the system has X of n as an input signal and Y of n as an output signal. So when X of n is applied to the system and Y of n is the output of the system, then Y of n is defined as k from -20 to plus infinity, or k from -20 to say plus n equal to xk, right? So if you expand this mathematical expression, that is Y of n is equal to k from -infinity to plus n x of k, it will become equal to yn is equal to x0 plus x1 plus x2 and so on for the positive values of the k, and for negative values of the k, it will be k -1, -2, -3, x -3, x -4, and so on. So if you look at the detailed expression now, we have some present value, and then we have future values, and on the left hand side we have the past values. So a system is defined as a static system if the present output is a function of only present input only. That is, yn is or y0 is a function of x0 only, and it does not depend upon the future values and as well as of the past values. But if we have a system which depend upon the present and as well as past values, then we can say that that system is a dynamic system. For example, if you have any system, say Y of n, which is dependent upon say past values. For example, say y5 is equal to k from -20 to plus 5 x of k. So it will become y minus infinity, y minus n, y minus m, y0,
then sorry, x in minus infinity, x minus n, x minus m, x0 plus x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5. So in this case, the y5, that is the present input, is the function of the present output is the function of the present input as well as of the previously applied input signals. So hence we can say that the system is dynamic. So you can differentiate between the static system and a dynamic system depending upon whether the system consists of certain memory element or not. If the system consists of certain memory element, then we can say that the system has certain memory, and that's why it is known as dynamic. If system does not have any memory component where it can store the previously applied inputs, or it can store the output because of the previously applied inputs, then you can say that the system is static. Right? So this is the difference between static and dynamic system. So if you have any question regarding the static and dynamic property of the system, then you can ask. Is any question regarding the definition of static and dynamic system? सर तो जो ये इक्वेशन लिखी है y5 is equals to sigma k is equals to minus infinity to 5, it is for dynamic system, right? It is for a dynamic system. So for static it would be y0 equals to x0. That's right, y0 is equal to x0 only. Okay, sir. Or y5 is equal to x5, y6 is equal to x6. Present output is the function of present input only. Okay, रोल नंबर 1 अभयदीप सिंह, आप सेक्शन 1 के स्टूडेंट हो और मैं भी ट्रिपल ई के हो, अभी आप क्यों ज्वाइन किया हुआ है? नहीं सर, वो अभी से पीयू मीट से इधर आया हूँ सर, ट्रिपल ई से आया था। ट्रिपल ई से आए हो? हाँ सर। ऐसे लीड के स्टूडेंट भी ज्वाइन किए हैं कोई? लीड का एग्जाम लीड नहीं सर, मीट का था सर। मीट का, ठीक है, ओके। तो आप पहली क्लास है आपकी? यस सर। ठीक है, ये आर्टिकल नया है तो कहीं डाउट कोई आता है तो उसी वक्त पूछ लिया करो, क्योंकि एकदम से नया आर्टिकल स्टार्ट हुआ है तो आपको समझने में थोड़ा इजी होएगा, और अभी पहला यूनिट ही चल रहा है एक तरह से। तो आप रिवाइज करो, जो सिलेबस में हो रखा है स्टूडेंट से पूछ लो, अपने क्लासमेट से जिसको आप पहले से इसी के अगर स्टूडेंट को जानते हो तो वो सब चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लो और कवर अप करो जितना हो गया हुआ सिलेबस अभी तक। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। यस, हाँ जी संध्या। आप गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर कर देंगे? काफी संध्या, वॉल्यूम बहुत ऑडियो बहुत कम साउंड है, बहुत ही कम साउंड आ रहा है। सर आप गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर कर देंगे? हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। So this is about, yes. सर जैसे सर ये सब्जेक्ट है सर, इसके लिए सर कोर्स प्री रिक्वायर्ड सर वो चाहिए, डिजिटल डिजाइन जो होती है सर फर्स्ट ईयर में सर, वो तो हम लोगों ने सर पूरा ही मिस हो गया, तो फिर सर वो कैसे होगा? नहीं, ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है डिजिटल सिस्टम डिजाइन का। सिलेबस में लिखा हुआ है। हाँ सर, वो सब मैंने देखा था, सिलेबस में लिखा हुआ था सर, कोर्स प्री रिक्वायर्ड लिख देते हैं। थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं कोई भी हो, वो फर्स्ट सेमेस्टर से इतना फर्स्ट ईयर बेसिक होता है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन में भी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ोगे या डिजिटल का कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आए, इस सब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें ना मैथमेटिक्स है और सिग्नल्स का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है। अभी इतना क्लासेस हुई नहीं है, गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना, कोई 5 लेक्चर अभी हुए हैं। ठीक है, टोटल मतलब 5 लेक्चर का कंटेंट डाला हुआ है, नोट्स का। लेक्चर तो मैं भी आपके 1 2 3 4 5 6 7वां लेक्चर है यार, 7th है। ठीक है, बाकी आप तो जानते होगे ना, उनसे बात कर लेना। ठीक है, या क्लास जब खत्म होएगा तब बात करना मेरे से, फिर हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है सर। तो दिस इज स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। Next is a causal and non-causal system. So
the theory, the theory that we have discussed for static is same as static and dynamic system is same as that. The same theory can be applied to the CHT system also. We have, although we have discussed it with the help of a DT system or the example of the DT system, but it is also true for the CT system. उसमें integration आ जाएगा, right? That is yt is a function of xt. If yt is a function of xt, that is the present output is a function of present input only, then it is a static system. But if you have yt is equal to integration of xt dt and the limit of integration is from minus infinity to say some positive value, say plus 5 or plus 10, then it means that the present output is a function of present input as well as of the previously applied inputs. So that's why we are getting the lower limit of integration from minus infinity. So in that case, the system becomes dynamic system. That is a system with memory. Right. So आपको पता होगा कि memories, what are the electronic element which consist of certain memory. कौन से elements होते हैं जो memory होती है जिनमें storage का capability रहता है. Flip flops, sir. Flip flops. So flip flops can store digital data, and in case of analog circuits, we have capacitors, inductors, which can store energy. Right. So these are some of the examples for which can be considered as memory element. Next is causal and non-causal systems. So definition of causal and non-causal system is written here. A system is said to be causal if the present value of the output depends only on present and the past values of the input. So that is a causal system. So you can read this definition and try to relate it with the first classification, that is static and dynamic. So kindly read the definition of causal and non-causal, and then try to relate it with static and dynamic. Yes, any do you find any kind of similarity between the two type of classification, that is static and dynamic, and then causal and non-causal? Sir, causal तो like static की तरह होगी. संध्या, आपका ऑडियो का मैग्नीट्यूड बहुत ही लो रहता है, थोड़ा ऊंचा बोलो, या माइक जो है वो अभी तो आपने बताया था कि आप माइक ठीक नहीं चल रहा. स्वयं. Sir, causal तो like static की तरह हो जाएगी. Yes, causals like static system. No, causal cannot be defined as a static system. Causal has to be a dynamic system. Okay, dynamic systems are causal system. A system is said to be causal if the like static system cannot be a causal system. Right? You can say that static system cannot be, because it is a present output function of present input. So let us try to read it again. The statement says that a system is said to be causal if the present value of the output depends only on the present and past values of the input. Right. So from this definition, it is very clear that a non-causal system will be dependent upon the future values of the input. Right. What is the meaning of non-causal system which does not satisfy this property or this statement? Right. So a non-causal system will be a system which is a function of the future values of the input. ये जैसे इस केस में है. Right. So these are the future values of the input. So if any system has present output y of n dependent upon the future values of the input, then that is a non-causal system. Any system which does not obey this property is a causal system. So under causal system, the present output can be a function of the present input only. Then it will be a static as well as causal. Then we have a second condition, that is the present output is a function of the present input as well as the past values of the input. In that case, it will be a dynamic system as well as a causal system.
right? So this is the relation between a causal and non-causal system classification and static and dynamic system classification, right? So you can understand it from the point of view of the non-causal systems. Non-causal systems depend on the future values of the input, and any system which does not satisfy this property will become a causal system. So clear? Yes, sir. वैभव शर्मा 124 रोल नंबर. यस सर. ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया आपको? और रिलेशन स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम और कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम्स के बीच में. यस सर. ओके, पारस गोयल 75. पारस गोयल 81. प्रियांशु राज 83. पुलकिता 88. ऋषि. Yes, sir. So okay, so let us move to the next type of classification, that is a linear and non-linear system. So a linear system is defined as a system which obeys these two properties. First is homogeneity and scaling property. Any system which obeys this property, that is homogeneity or scaling property, as well as the second property, that is additivity property, that system is known as linear system. Right? So a system is said to be linear if it obeys the scaling property as well as the additivity property of a system. So that system is defined as a linear system. The homogeneity or scaling and the additivity property together are known as superposition theorem. So you might have heard about this theorem, that is superposition theorem. So any system which obeys this theorem, that is a superposition theorem, is again said to be known as a linear system. So a linear system is the system which obeys the superposition theorem. And what is the superposition theorem? Superposition theorem has two characteristics. One is homogeneity or scaling, and second is additivity property. Now let us see how to identify whether a system is a linear system or a non-linear system. Let us assume that we have a system which is an interconnection of different electrical and electronic components, and we have X of n as an input and Y of n as an output. So let us assume that we have applied at t1 instant or n1 instant a input signal to the system, which is denoted with the help of symbol x1n. To this input x1n, we have an output y1n, and due to another input applied at another time of instant, say at t2 or n2 instant, the input signal is x2n, and due to this input, the output is y2n. So these are the two inputs that we are considering, and against these two inputs, we have two individual outputs y1 and y2. Now, what is scaling property? To verify whether this system is linear or not, or a non-linear system, we first of all apply the scaling property. Scaling property says that if you scale the present input, or if you scale the input by some scaling factor, say a, then the output should also get scaled by the same value, that is a. If you are scaling the input by b, then the output should also get scaled by the same scaling factor, that is b. So this is the first condition, that is any system has to obey so that it can become a linear system. Second property, or the second condition, is that it should have additivity property, or it should obey the additivity property. So what is the additivity property? Additivity property say that if we add x1n and x2n, or ax1n plus bx2n, then the output produced because of this combined input should be same as that of the sum of the individual inputs produced because of the individual signals, that is ay1n plus by2n, right? So that is known as additivity property. Any system which obeys this these two properties, that is scaling and additivity property, then that system is known as a linear system. So if you have any question regarding the regarding how to identify a linear system, then you can ask.
Yes, any question? No, sir. Pankaj? No, sir. Okay. Priyanshu Raj, roll number 81. No, sir. Yes, 130. No, sir. 111, Shreya. No, sir. 104, Sanjeev. So these are the third classification, that is a linear and non-linear system. Then we come to the fourth classification, which is known as time invariant and time variant systems. So as the name specify that, when we say that a system is time invariant, it means its properties does not changes with respect to the time. So it is different from static and dynamic, right? You cannot relate static and dynamic system with time invariance and variance property of the system. So time invariant systems are those systems which does not changes its property or does not changes its behavior with respect to the time. Whereas time variant systems are those whose properties or the behavior or the characteristic changes with respect to the time. So those systems fall under the category of time variant system. So this is the definition or statement of the time invariant system. A system is time invariant if the behavior and the characteristic of the system do not change with respect to the time. Right. Now let us see how to identify whether a system is a time invariant or not. So let us assume that we have an input signal x of t. Right. This is the input signal x of t, and against this input we are getting some output from the system, that is y of t. This bi-headed arrow or both-headed arrow is generally used to relate input with the output. On the left-hand side of this arrow, we write the input signal, and on the right-hand side, we generally write the output of the system. Right. So for xt, we are getting an output yt. Now, what is the time invariance, and or how to identify the time invariance property of the system? So if we say time shift the input signal, for example, here we are delaying the input. So if we are delaying the input or advancing the input or time shifting the input signal by say t0 unit, then the output signal, that is yt, should also be shifted by the same unit, right? So that is known as time invariance property of the system, or the system is known as time invariant system. Similarly, if you have a discrete time system, if you shift the input signal by n naught, right, either towards the left hand side or towards the right hand side, for example, here we are shifting it towards the right hand side, that is the delayed version, then the output should also get delayed by the same unit, that is n naught. Right. So that is the time invariance property of a system, or the system is known as time invariant. Any system which does not obey this property, that is known as time variant system. So any question regarding the fourth classification? सर सर एक बार ग्राफिकली समझा दीजिए ये फोर्थ वाला. ग्राफिकली तो अभी ट्यूटोरियल में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे आपको काफी अच्छे से समझ में लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है. अभी तो स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं. इसके न्यूमेरिकल्स रहते हैं और आपके फर्स्ट सेशंस में भी आएंगे, फाइनल में भी ज़्यादातर आते होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस हो जाएगा. अगर अभी तो आप कुछ एग्जांपल पूछ सकते हो, मैं एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ. अगर आप एग्जांपल के थ्रू एग्जांपल जैसे मॉड्यूलेशन सिस्टम्स हो गए, आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा, राइट. सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटर सर्किट लगता है, इट हैज़ टू बी टाइम वेरिएंट, राइट. टाइम वेरिएंट होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी change the one of the characteristic of the carrier signal with respect to the instantaneous amplitude of the information signal. तो इसमें जो instantaneous word आ रहा है, it shows that कि
जो सिस्टम है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता रहे, उसी से मॉड्यूलेशन जो है हमें मिल सकती है. सो इफ यू आर designing any modulator, it has to be time variant system. So any system अगर वेवफॉर्म की की फॉर्म में आप बोलोगे तो वेवफॉर्म की फॉर्म में ये रहेगा कि वेवफॉर्म की फॉर्म में भी हो सकता है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. y इक्वल टू k के अलावा सर मुझे कोई और समझ में नहीं आ रहा सर. नहीं एक और चीज़ है, मैं आपको वेवफॉर्म की हेल्प से दिखाता हूँ. एक ट्यूटोरियल शीट का सोल्यूशन है हमारे पास. तो ये तो ये एक ट्यूटोरियल शीट हमने सॉल्व भी करके देखी हुई है और गूगल क्लासरूम पे भी मैंने पोस्ट की हुई है. तो इसमें एक ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट जो है ये वाला. ठीक है, ये हमने सबने कर रखा हुआ है. जिन्होंने ट्यूटोरियल अटेंड किया है वो उन्हें अच्छे से पता है. ये किया हुआ है ना हमने, सभी फैमिलियर है न्यूमेरिकल से. तो इसमें हमने x माइनस ट्वाइस ऑफ t प्लस 2 फाइंड आउट करना था. सो इसमें हमें पता है कि x माइनस ट्वाइस ऑफ t प्लस 2 जो है वो क्या चीज़ आएगी, उसकी वेव फॉर्म जो है कंप्रेस हो जाती है और टाइम इन्वर्ट हो जाती है. तो इस तरह से x ऑफ t को हमने कुछ टाइम शिफ्ट किया है. वी आर शिफ्टिंग इट से, अगर यहाँ से मैं -2 हटा दूँ और xt प्लस 2 ही लिखूँ ओनली, इफ यू आर राइटिंग इट एज xt प्लस 2, इट मीन्स दैट this will be shifted towards the left hand side by 2 unit and it will start from -4 and end at +1, right? So ये आपके पास xt plus 2 आ जाएगा. Now let us suppose that we are applying this xt signal to any system and that system is producing this output, this kind of a waveform, right? कि हमने xt सिग्नल लगाया और ये हमें yt इनपुट ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिल रही है. हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो इस वेवफॉर्म को इस वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. अब सपोज करो हम इनपुट सिग्नल को 2 यूनिट से एडवांस कर देते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. तो जो आउटपुट आएगा उसका वेव फॉर्म जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा शेप में. द शेप ऑफ द वेव फॉर्म विल रिमेन सेम, दैट इज इट विल बी काइंड ऑफ अ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जो अभी शो हो रही है, बट इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड बाय 2 यूनिट. दैट इज इट विल स्टार्ट फ्रॉम -3 and end at -1, right? So that kind of a system is known as time invariant. So if you are shifting the input signal by 2 units towards the left hand side or the right hand side, then the shape of the output waveform is not getting affected and it is only shifting either towards the left hand side or towards the right hand side, depending on whether you are shifting the input signal towards the left hand side or towards the right hand side. So that kind of a system is known as a time invariant system, right? Now suppose if you are applying this xt signal to some another input to some another system and say when you and you are getting triangular waveform and say when you shift it the input signal by 2 unit towards the left hand side, that is the advanced version, that is xt plus 2, and then you are not getting the triangular waveform and instead of that you are getting say sine wave, right? उसकी जगह sine wave मिलना start हो जाता है. Then you can say that this system is a time variant system because it has changed its property when the input signal is delayed or advanced by some unit, it has changed its behavior or its property. So such type of system is known as time variant system, right? So if you have any question then you can ask. सर मतलब शेप चेंज नहीं होनी चाहिए कितना भी शिफ्ट कर लो तो वो टाइम आउटपुट वेवफॉर्म की जो है वो जो आपने एक्सटी सिग्नल अप्लाई किया था उसके अगेंस्ट yt आपके पास एक वेवफॉर्म आ रही है, ठीक है?
तो वो इनपुट से रिजेंबल भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, ठीक है, कुछ अलग ही हो सकता है। जैसे इस केस में जो है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हम अज्यूम कर रहे हैं कि आउटपुट आ जाएगी, बट अगर आप इनपुट को कुछ यूनिट से डिले करते हो या एडवांस करते हो तो आउटपुट का जो शेप है वेव फॉर्म का वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो जैसा पहले था वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। ओके सर। Right, so this is time invariant and time variant system. Next is invertible and non-invertible system. This is a very easy classification. Invertible system means those systems whose inverse exist. कोई भी system जिसका inverse exist करता हो उसको हम invertible system बोलते हैं. And if we have a system and it does not have any kind of a inverse function, then that system is known as non-invertible system. Right. So let us try to understand this with the help of a block diagram. Say we are applying x of n as an input to a particular system, and it is producing an output which is equal to y of n. Now let us assume that if this y of n is applied to some another system, right, and you are getting same input, that is the initial input equal to x of n, right, इसका output जो है वो xn के equal आ जाएगा जो initial input है। तो हम बोलेंगे जो second system है जो cascade में attach किया हुआ है, it is a kind of an inverse of the first system. So we can say that both the systems are invertible systems, right? So if inverse of any system exists, then that systems are known as invertible systems. And if the inverse of any system does not exist, then that type of system is known as non-invertible system, right? So this is an easy definition or easy concept to understand, that is what is invertible and non-invertible. Next is one of the important concept which is known as stable and unstable system, right? So what do you mean by stable and unstable system? Does anyone? Stable and unstable system. Sir, output stays within boundaries Output stays within a boundary. Okay. for stable systems. For stable system. So as told by Rishi, that is दोनों बाउंडेड होगी, yes, Sandhya. सर इनपुट और आउटपुट दोनों बाउंडेड होगी। दोनों बाउंडेड हो, राइट। सो मे बी संध्या ने ये बाइबो स्टेबल सिस्टम का फुल फॉर्म संध्या को पता होगा, इसके लिए उसने इसका आंसर इस तरह से दिया है। सो स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम. सो स्टेबल सिस्टम्स और स्टेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू डिफरेंट नोशंस, राइट. सो दो डिफरेंट नोशंस होते हैं, एक तो हम बोलते हैं बाइबो स्टेबल सिस्टम एंड सेकंड इज नोन एज एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम. So let us start with the first type of notion, that is which is known as bibostable system. So full form of bibostable system is bounded input, bounded output stable system, right? Bounded input, bounded output stable system. Now what is bounded input, bounded output? So let us assume that we have any system, and to this we are applying a kind of a bounded input, and it has a fixed magnitude that is equal to say capital A. That is the input is bounded by capital A. It cannot go beyond capital A. राइट. कैपिटल ए कैन बी इक्वल टू 5 वोल्ट 10 वोल्ट, मतलब उससे नीचे रहेगा या उसके इक्वल चला जाएगा, बट इससे ऊपर नहीं जाएगा कभी भी. सो वी हैव प्रोवाइडेड अ लिमिट टू द इनपुट सिग्नल, दैट इज ए बाउंडेड इनपुट इज ए काइंड ऑफ इनपुट सिग्नल which cannot go beyond a particular magnitude, right? So it is a bounded thing. Now if you are applying this bounded input to a system and system is producing output, so let us understand how the output will be produced by the system. So initially when the system is at rest, so what is the meaning of system at rest? System at rest means when we have not applied the input signal, that is at t is equal to 0, right? So at t is equal to 0, there will be no output. As soon as you apply the input signal x of t to the system will start getting some kind of input, and it start to try to process that particular input signal. तो उसका इनपुट आउटपुट क्या होगा? इट विल स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम अ जीरो मैग्नीट्यूड, तो जीरो से राइज करना स्टार्ट करेगा, राइट. एंड इट रीचेस अप टू अ सर्टेन लेवल से इक्वल टू कैपिटल ए, एंड देन मेंटेन इट्स मैग्नीट्यूड अप टू कैपिटल ए एंड डज नॉट फॉल or does not go beyond capital A. So in that case it is known as a bounded input, bounded output stable system. That is, for bounded input
we are getting an output which is bounded by some magnitude. Here capital A, that is a magnitude by which the output is bounded, may or may not be equal to the input magnitude, right? यहाँ पे B भी हो सकता था, C भी हो सकता था, but कोई भी bounded magnitude. जैसे कि आप अज्यूम करो कि इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट तक बाउंडेड है और आउटपुट आपको मिल रहा है जो 15 वोल्ट तक बाउंडेड है. Even then the system is known as bounded input, bounded output stable system, because the output is not overshooting some kind of a value, right? So it remain within a certain limit. So that's why it is known as a bounded input, bounded output stable system. Now, if for a bounded input, we are getting an output which is unbounded, right? Unbounded means its magnitude is keep on increasing with respect to the time, and it does not having any upper limit or upper boundary condition, और वो हमेशा ही टाइम के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जा रहा है, and it does not have any boundary or it does not remain bounded. So in that case, the system is known as bounded input, bounded output, unstable system, right? Or simply unstable system, or BIBO or BIBO, unstable system, right? So that is the first notion of stability, that is bounded input, bounded output, stable systems. For defining a system as a bounded input, bounded output, stable system, the one of the prerequisite is that the inputs must be bounded one. जो इनपुट है वो बाउंडेड होनी चाहिए. अगर आपके पास जो इनपुट है वो अनबाउंडेड होगी तो आप सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकते. You can comment about the stability of the system, whether the system is stable or unstable, if and only if when the input is bounded. अगर आप अनबाउंडेड इनपुट अप्लाई कर रहे हो तो उससे अगेंस्ट सिस्टम चाहे अनबाउंडेड आउटपुट भी प्रोड्यूस कर दे, तब भी आप नहीं कह सकते कि सिस्टम जो है अनस्टेबल है, क्योंकि आप प्रोवाइड ही उसको एक तरह से अनबाउंडेड इनपुट दे रहे हो. उसके अगेंस्ट अगर वो वैल्यू ओवरशूट भी कर जाता है एंड इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, राइट? So even in that case, the system is then even in that case you cannot say anything about the stability of the system, right? So you can comment about the BIBO stability of a system if and only if you have a input which is bounded by some value, right? Unbounded input के लिए आप कभी भी stability का लिए comment नहीं कर सकते. So this is the first notion which is known as bounded input, bounded output stable system. इसको हम necessary condition भी बोलते हैं for absolute stability. Now come to the sufficient condition for the absolute stability. The sufficient condition for the absolute stability is that if the output produced is bounded and decaying with respect to the time, then the system is absolutely stable system. That is, if we have an input which is applied to the system and it is bounded between plus A and minus A, and the system is producing some output which is bounded by again plus A and minus A, or say plus M or minus M, right? But after some time, right, after the elapse of some time, its magnitude start decaying with respect to the time, right? So then in that case, the system is known as absolutely stable system, and as t approaches infinity, its magnitude will become equal to 0, or it will tend towards 0, right? So that becomes the sufficient condition for the stability. So if any system satisfy the necessary condition, then that is known as BIBO stable system. And if the system satisfies the second condition or second notion of the stability also, then it becomes the absolutely stable system, right? So this is about the stability of the system. If you have any question regarding the or any doubt regarding the concept of stability, then you can ask. सर Yes. सर बाउंडेड इनपुट का कैसे पता चलेगा? टी की रेंज दे रखी होगी क्या? बाउंडेड इनपुट हमारे पास बहुत सारे सिग्नल बाउंडेड इनपुट होते हैं, जैसे साइन ओमेगा टी बाउंडेड है +1 -1 के बीच में, कॉस ओमेगा टी बाउंडेड है +1 और -1 के बीच में. ऐसे ही हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल है, इट इज बाउंडेड बाय +1. सो देयर आर मेनी सिग्नल्स व्हिच आर बाउंडेड. स्क्वायर वेवफॉर्म इज अ बाउंडेड सिग्नल, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इज अ बाउंडेड सर बाउंडेड इनपुट का कैसे पता चलेगा? वही एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने इनपुट जो है इन्हीं में से अप्लाई करोगे ना. इनपुट शुड बी ए सिग्नल. आउटपुट फिर सर अगर -1 से 1 में इनपुट है तो आउटपुट कहाँ से कहाँ होगा? आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर. अगर सिस्टम स्टेबल है तो वो बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा बिटवीन +m एंड -m,
प्लस मैग्नीट्यूड एंड माइनस मैग्नीट्यूड, वो कुछ भी हो सकता है, +5 -5 भी हो सकता है, +20 -20 भी हो सकता है, +0.5 -0.5 भी हो सकता है। तो सर साइन ओमेगा टी में +1 -1 बाउंडेड आउटपुट हुआ। साइन ओमेगा टी में +1 -1 जैसे बोला पहले कि वो बाउंडेड रहेगा +1 और -1 के बीच में। वो सर बाउंडेड आउटपुट हुआ ना। इनपुट भी बाउंडेड है। अगर आप साइन ओमेगा टी किसी सिग्नल को, किसी सिस्टम को अप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग से v equal to vm sin omega t to any system, right? Let us say you are applying it to an amplifier, then the output produced by the amplifier, if it is bounded between certain limit, say जो उसका मैग्नीट्यूड है वो पीक टू पीक +5 वोल्ट से -5 वोल्ट के बीच में जा रहा है, इवन देन इट इज अ बाउंडेड। तो सर अगर मतलब बाउंडेड इनपुट नहीं है मगर बाउंडेड आउटपुट है तो सिस्टम फिर भी स्टेबल होगा क्या? अब क्या क्योंकि पूछा सर वो तो आपने? फिर एक ही, सर अगर बाउंडेड इनपुट नहीं है बट बाउंडेड आउटपुट है तो वो सर एक वो रेंज तो में बोल दिया, आपको बताया कि you can comment about the stability of any system if and only if when the input is bounded. जब तक इनपुट बाउंडेड नहीं है आप सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सो जैसे अभी हमने देखा कि अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, साइन ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड आपको पता है +1 और -1 के बीच में रहता है। अगर हम साइन ओमेगा टी सिग्नल किसी एम्पलीफायर को देते हैं और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो +10 और -10 के बीच में आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका मैग्नीट्यूड तो साइन का तो 1 के बीच में रहना चाहिए, या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। तो एम्पलीफायर क्या करता है, ऐसे कैसे हो गया कि +10 और -10 के बीच में चला गया? हमें पता है साइन का मैग्नीट्यूड तो 1 और -1 के बीच में रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों हमने बोला कि हमने एम्पलीफायर को एक इनपुट सिग्नल दिया जो +1 या -1 के बीच में बाउंडेड है, साइन ओमेगा टी, और उसने प्रोड्यूस कर दिया +10 और -10 वाला सिग्नल? ऐसा कैसे हो गया? यस, तो बताएगा ऐसे कि अभी जैसे एग्जांपल डिस्कस की तो हमने यही सर बोला, एक बार रिपीट कर दीजिए। जैसा अभी बोला कि अगर सपोज करो आपने साइन ओमेगा टी सिग्नल अप्लाई किया है, जैसा अभी जैसे स्लाइड में भी शो हो रखा है, जैसे ये +a और -a है, सो लेट अस अज्यूम दैट इट इज बिटवीन +1 एंड -1। वी नो दैट द साइन सिग्नल इज बिटवीन +1 एंड -1। साइन का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है वो +1 और -1 के बीच में ही आप वेरी कर सकता है। So it has a maximum value, sin theta can attain a maximum value of +1 or -1. Right? If you are applying this signal to an amplifier and say the system is behaving like an amplifier and the output produced by the amplifier has a magnitude between say +10 to -10, तो ये तो साइन का के अगेंस्ट हो गया, +10 और -10। सर हो सकता है स्केलिंग हो रही हो। स्केलिंग हो रही हो, राइट? सो sin omega t will remain sin omega t and you are multiplying it with some scaling factor, say capital A equal to or capital G, where G is the gain, which is equal to 10, right? So that's why it is converted. Sin omega t remains plus between +1 and -1, but you are multiplying it with some scaling factor, say 10, and you are increasing the amplitude of the signal by 10 times with the help of an amplifier. So this is all about classification of systems and signals. We have completed the first unit of the syllabus, and now we will start the second unit of the syllabus. You can, if you have any question, then you can ask. Otherwise, you can leave the class, and the students who joined EC third semester from any other branch with the help of this PU Meet entrance exam, वो स्टे कर सकते हैं, बाकी सभी लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। और सर हाँ जी, सर बीबो में जो अपना इनपुट है वो टाइम है क्या? किसमें? बीबो में अपना जो इनपुट है वो टाइम है क्या? नहीं, सिग्नल है, हम X फीड of क्या t, करा रहे हैं सर? X of t, सिस्टम में क्या फीड करवा रहे हैं हम? सिग्नल फीड कर रहे हैं। सिग्नल जैसे मे बी अगर आपने हो सकता है शुरू की क्लासेस जो हैं वो नहीं अटेंड की हो, सो वी आर डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट डील्स विद सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। Signals are defined as a function of time, that is x as a t or f as a t, right? So we are applying signal
that is the we are applying some kind of a function to the system as an input. नहीं सर मैं ये समझ गया, बट एक चीज समझ में नहीं आ रही कि सर इधर जैसे कि इसमें ले लेते हैं एग्जांपल में, इसमें -2 से -d है शायद, ये -d है सर -a है? -a +a और -a. सर ये -a से a में ये आउटपुट बाउंडेड है, तो सर इनपुट इसमें बाउंडेड है और अच्छा, आउटपुट भी बाउंडेड है. तो सर इनपुट कहाँ से कहाँ बाउंडेड है? +a और -a, +a -a कुछ भी हो सकता है. तो सर हम ये बोलेंगे It कि should not plus be a equal to से- infinity बस. A तो should plus not be a equal to से- infinity. तो सर हम ये बोलेंगे +a से -a में इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों बाउंडेड है. हाँ, इनपुट और आउटपुट दोनों बाउंडेड है, प्लस द आउटपुट इज डिकेइंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. ओके सर, मुझे लगा कि सर इनपुट x एक्सिस पे वो करेगा, बाउंड करेगा. नहीं, एक्स और वाई टुगेदर फॉर्म द सिग्नल. एक्स और वाई जो हैं वो सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. द वाई एक्सिस पैरामीटर इज नोन एज डिपेंडेंट पैरामीटर और डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द एक्स एक्सिस पैरामीटर इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द सिग्नल. सर अगर 0 से t इन्फिनिट तक है और सर आउटपुट जो है, मगर आउटपुट जो है हमारा वो -a से +a में बाउंड कर रहा है, तो भी वो बाउंडेड सिस्टम हुआ गया, तो भी वो स्टेबल सिस्टम हो गया. अब टाइम का पूछ रहे हो कि टाइम अगर -∞ से +∞ है. हाँ सर, मगर सर आउटपुट बाउंडेड है. टाइम का कोई नहीं. साइन सिग्नल और एवरलास्टिंग सिग्नल दे एग्जिस्ट फ्रॉम -∞. We are only considering the magnitude, whether the magnitude is remain bounded or not. If it remains bounded, then check for the second sufficient condition, that is whether the signal is decaying after some period of time or not. If the signal is decaying, then it will become absolutely stable, and if the signal is not decaying with respect to the time, then it will become only bounded input, bounded output stable system. सर अगर डीके कर रहा है तो भी तो वो बाउंडेड हुआ एक तरह से ऊपर से. हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? सर अगर सिग्नल अपना डीके कर रहा है तो भी तो वो सर बाउंडेड हुआ, तो फिर वो स्टेबल होता है क्या? अभी जैसे शुरू में बोला कि देयर आर टू नोशंस ऑफ स्टेबिलिटी, देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी. वन इज नोन एज बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम. So under bounded input, bounded output stable system, the output does not decays with respect to the time. It remains between some magnitude. That is, say if it is a sine signal, then it will remain between +10, say -10, or +15 or -15. Right? It will not decay with respect to the time. Zero नहीं होएगी कभी भी. तो वो bounded input, bounded output stable system हो गए. Then comes the concept of absolute stability. Right? If the second condition is met by any system also, that is the output is remaining bounded between certain limit up to some time period, say up to say 30 minutes or up to 1 hour, and after 1 hour the output slowly start decreasing with respect to the time, then that system is known as bounded input, bounded output stable, as well as absolutely stable system. So absolutely stable system or absolute stability is a kind of a higher thing as compared to bibo stable system. तो सर सेकंड वाले जो उसमें है, उसमें जो दूसरा वाला है वो सर एब्सोल्युटली स्टेबल है. वो एब्सोल्युटली स्टेबल है. Is any other question? ओके, आप में से कौन से स्टूडेंट जो हैं वो दूसरी ब्रांच से ज्वाइन किया है? I am from Tripoli UIT only. अमरिंदर कौर. ओके, और सर सेम सर. अभयदीप सिंह. और कोई स्टूडेंट भी है इसने? I am from mechanical sir. Puneet. पुनीत करनगर. Yes sir. मैकेनिकल से. Sir, I हाँ, am आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. आगे भानुप्रिया पनवर. Sir, I am from ECE UIT होशियारपुर. इसी तो वो तो चेंज नहीं हुआ, ब्रांच तो चेंज नहीं हुई. ठीक है. और Yes sir. और कोई स्टूडेंट जिसने ज्वाइन किया हो किसी और इंस्टीट्यूट सर से? और भी है सर, लेकिन अभी सर वो क्लास में नहीं है. ठीक है. मैं गूगल, एक संध्या ने बोला था क्लासरूम का लिंक जो है, गूगल क्लासरूम का लिंक पोस्ट करने को, वो मैं पोस्ट भी कर देता हूँ. ठीक है.
तो आप लोग पूछो, आपने क्या पूछना चाहते हो जो मीट के थ्रू जिन्होंने ज्वाइन किया है। सर यही सर, अभी तो सर जैसे फर्स्ट क्लास है सर, अभी तो कुछ भी ऐसे समझ नहीं आया, क्योंकि सर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोगों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा और डिजिटल डिजाइन भी नहीं पढ़ा। वो मैंने जैसे आपको बोला कि ये इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो सिलेबस में लिखने के लिए हमें लिखना पड़ता है। अब थर्ड सेमेस्टर में आप 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे, जबकि फर्स्ट ईयर में जो है आपने ईसी के 2, चाहे बीईसी के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उन्होंने 2 सब्जेक्ट ही पढ़े होते हैं, 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो 6 के लिए हम प्री रिक्विजिट क्या लिखेंगे, ठीक है ना। 6 सब्जेक्ट्स के लिए प्री रिक्विजिट क्या रहेगा, वो मेंशन करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी एक तरह से। डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन इसके लिए नहीं चाहिए किसी तरह से भी, जो आपने पढ़ा है वो इनफ है फर्स्ट ईयर में। और सब्जेक्ट के लिए हो सकता है आपको डीएसडी चाहिए, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर में पढ़ो, या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पढ़ो, एईसी, तो उसके लिए आपको प्री रिक्विजिट लगेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर, या कोई और सब्जेक्ट जो भी आप फर्स्ट ईयर में, जैसे